हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का, दैट इज़ जी कोड्स एंड एम कोड्स। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो माई सेल्फ सुदिता हाजरा एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू इजी मैक कॉन्सेप्ट्स चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। जी कोड में यहाँ पे G00, G01 और G02 इस पेज पे आपको दिखाया गया है। तो G00 कोड जो है ये दो टाइप के कोड आते हैं बेसिकली, मैनुअल कोड और ऑटोमेटिक कोड। सो मैनुअल कोड के लिए हम बेसिकली जी कोड और एम कोड का यूज़ करते हैं। सो G00 किसके लिए यूज़ होता है? पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग या रैपिड ट्रांसफर्स की कोई भी हमें अगर रैपिड ट्रांसफ़र करना हो तो G00 हम यूज़ करते हैं। देन G01 दैट इज़ फॉर लीनियर इंटरपोलेशन, G02 इज़ फॉर सर्कुलर इंटरपोलेशन और क्लॉकवाइज। देन G03 इज़ फॉर सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज के लिए G03 यूज़ होता है और क्लॉकवाइज के लिए यूज़ होता है G02. So G02 and G03 is basically for circular interpolation. G4 किसके लिए यूज़ होता है? G4 is used for dwell. G5 is used to hold और डिले, कुछ टाइम के लिए रोकना हो प्रोसेस को तो G05 यूज़ करते हैं। देन G06 पोलर पैराबोलिक इंटरपोलेशन। देन G07 unassigned, G08 for acceleration of feed rate and G09 for deceleration of feed rate। मतलब G08 कब यूज़ करते हैं? अगर फीड रेट को एक्सीलरेट करना है तो, और अगर फीड रेट को कम करना हो तो G09 यूज़ करते हैं। G10 फॉर लीनियर इंटरपोलेशन फॉर लॉन्ग डायमेंशंस और सिमिलरली G11 फॉर शॉर्ट डायमेंशन अप टू 10 इंचज़ के लिए यूज़ होता है। देन G12 इज़ अनअसाइंड, मतलब कोई भी उसे वैल्यू नहीं दिया गया है। G13 टू G16 इज़ फॉर एग्जिस्ट डेजिग्नेशन, G17 XY प्लेन, G18 XZ प्लेन, G19 YZ प्लेन, G20 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज फॉर लॉन्ग डायमेंशनल, then G21 for short dimensional circular interpolation, then G30 circular interpolation, G31 also for circular interpolation clockwise for short dimensions, G32 is unassigned, G33 thread cutting, G34 also thread cutting linearly increasing lead, then G35 is for thread cutting linearly decreasing lead. Then next G36 to G39 is unassigned. G40 for cutter compensation cancels to 0. G41 cutters radius consumption compensation, cutter radius compensation. G43 also similar cutter compensation. G44 also cutter compensation. G60 target value, G54 to 59 datum point or zero shift. Then G62 rapid transverse positioning, G63 tapping cycle, G64 change in feed rate, G65 to 69 is also unassigned, G70 is dimensioning in inch units। ये सबको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक्स या कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। So then next G71 dimensioning in metric units, G80 canned cycle cancelled, G81 to 89 canned drilling and boring cycles, G90 specific absolute input dimension, G91 specifies incremental input dimension, 92 for program reference point shift, 94 feed rate per minute, G95 feed rate per revolution, G96 is spindle feed rate for constant surface feed, G97 for spindle speed in revolutions per minute. So this is all about G code. ओके, सो आपको याद रखना है और आप
को अगर डाउट है तो आप पॉज करके इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज करने में आसानी रहे। देन एम कोड्स में बेसिकली हम बात करें तो एम कोड्स में M00 फॉर प्रोग्राम स्टेप, M01 फॉर ऑप्शनल प्रोग्रामेबल स्टेप, then M02 is end of program, M03 is spindle on in clockwise direction, M04 is spindle on in counterclockwise direction, M5 is spindle stop, M6 tool change, M07 coolant supply number 1 on, M8 coolant supply to number 2 on, M9 हम लिखेंगे तो होगा coolant off, M10 is for clamp, M11 is for unclamp, M12 is unassigned, मतलब जिसका कुछ M12 ऐसा यूज़ होता ही नहीं है। M13 इज़ फॉर स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कूलेंट ऑन, स्पिंडल ऑन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कूलेंट ऑन इज़ M14, M15 रैपिड ट्रांसफर्स इन प्लस डायरेक्शन एंड M16 इज़ रैपिड ट्रांसफर्स इन negative direction, M17 is unassigned, M19 is spindle stop at specified angular position. सो यहाँ पे M19 तक आ चुका है। आगे देन M30 नेक्स्ट इज प्रोग्राम स्टॉप एट एंड टेप प्लस टेप रिवाइंड, M31 is interlock bypass, M33 32 to 35 is constant cutting velocity, then 40 to 45 is gear changes otherwise unassigned, then M50 is for coolant supply number 3 on, M51 is coolant supply number 4 on, 55 is linear cutter offset number 1 shift, then M56 is linear cutter offset number 2 shift, then M60 is piece part change, M61 is linear piece part shift location 1, M62 is linear piece part shift location 2, M68 is clamp piece part, M69 is unclamp piece part, M70 is unassigned, M71 is angular piece part shaft location 1, M72 is angular piece part shaft location 2. Then next क्या है, M73 to 77 तो unassigned है. Then M78 is clamp non-activated machine bed ways, M79 is unclamp non-activated machine bed ways, M80 to 89 is unassigned. So thank you so much guys for watching this video, and if you found this video helpful then share it as much as possible. और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो सब इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे. थैंक यू सो मच गाइस.